अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो KTrade प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आते हैं। एक स्टॉर्म के बाद फाइनली एक काम एंड क्वाइट सिचुएशन मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। इट मींस के पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। फाइनली जिस चीज़ का वेट था वो अब एक अवेटिंग सिचुएशन को छोड़ के मार्केट के अंदर एक सिनेरियो पॉजिटिविटी के हवाले से बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस मीन्स के मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे थे वो फाइनली ग्रैब कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज द रीजन आज के दिन 45,000 अबव मार्केट के पोजीशंस दिखाई देती है और एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट काफ़ी ईयर से बाद दिखाई दे रहा है। ये तो हुई मार्केट की बात, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स के बारे में, क्योंकि जब हम देखते हैं बिजनेस सिचुएशन या बिजनेस जॉनरा डिजिटलाइजेशन की तरफ दिखाई देता है और ज़्यादातर कोविड की सिचुएशन के बाद जितना बिजनेस फ्लरिश होते हुए दिखाई दिया है वो टेक्नोलॉजी टेक की दुनिया में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो वी हैव एक्सक्लूसिव गेस्ट इन आवर स्टूडियो, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेडी हिमलर, आप हैं ग्लोबल पार्टनर आंटलर वेंचर कैपिटल। अस्सलाम वालेकुम टेडी, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं साद बिन अहमद साहब, आप KSB सिक्योरिटी के MD हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। टेडी इज आवर एक्सक्लूसिव गेस्ट टुडे एंड वी विल स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज ही डोंट नो उर्दू, सो ही इज स्टार्टिंग द प्रोग्राम। ओके टेडी, टेल अस अबाउट समथिंग about startups. What are startups and what are the genre of startups in the investment perspective and in the business perspective? So startups are new businesses, in short. Many times they're enabled by a new wave of digital technologies. And they could be any sector. It could be in commerce, where you have e-commerce companies. It could be in financial services, where you have fintech companies. It could be in real estate, where you have property tech companies and healthcare. So every industry today, whether it's in the United States or Pakistan, is undergoing a change wherein there are new competitors that are digitally native. Right. When we're starting a new business, especially you talk about startups, when you start a business, you have to face some challenges. So what are the challenges we have faced in startups? Yeah, I think the two primary challenges that often are seen is first, finding the right talent and finding those who have engineering experience, who have the ability to build scalable systems, who have the business acumen to grow a business to a very large size. So talent and human capital is the first. The second is financial capital. And especially in Pakistan, there's been really a lack of financial capital for startups. So by comparison, India last year had $30 billion of venture capital funding. Right. Indonesia, $6 billion of venture capital funding. What do you think about Pakistan? Right. Pakistan, 400 million in the past year. That 400 million US dollar is actually more than the cumulative amount ever invested in venture capital in Pakistan. It is so early in financial capital to tech startups here. Let's hope for the best for the startups business in Pakistan. साद आपको इंक्लूड करेंगे, गुफ्तगू में शामिल करेंगे। सबसे पहले ये बताइए साद, स्टार्टअप्स की बात हो रही है, टेडी जैसे कि एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि इन्होंने पॉइंट आउट किया, चैलेंजेस हैं बट एक अपर सरफेस से दिखाई देते हैं जो कि इनको ज़्यादा जो है वो एक एग्जैजरेट नहीं किया। आप समझते हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो स्टार्टअप्स फेस कर रहे हैं अभी? सो ऑफ कोर्स यहाँ पे इंक्यूबेशन रिलेटेड काफ़ी इस तरह के इश्यूज हैं जिसमें कि देयर आर सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे उनके पास टैलेंट है, दे वांट टू डू दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू डू डिफरेंट बिजनेसेस, बट उसमें उन लोगों को सपोर्ट या तो फाइनेंशियल कैपिटल नहीं मिलता, और फाइनेंशियल कैपिटल के लिए फिर देन यू नीड वेंचर कैपिटल फंड्स to invest in those entities and support them, but at the same time they also need that sort of discipline जिसमें कि उनको कंपनीज चलाने का तजुर्बा चाहिए होता है, वो भी उनको चाहिए होता है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में ये रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से है कि जो गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं होती। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें ज़रूरत है ना सिर्फ कैपिटल प्रोवाइडर्स की, बल्कि इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि जो वहाँ पर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिज़नेस रन कर रहे हैं, उनको लीगल अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है
लॉ की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, उनके पास जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स वो कर रहे हैं, अपने बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, उसमें भी उनको फाइनेंशियल नो हाउ होनी ज़रूरी है। Right. तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर के He has point out 2 or 3 things. I guess I Yes, am discussing heard. it point by point. First of all, what are the regulatory frameworks in globally we can see in the entrepreneurship and startups? Yeah. So I think there's investment regulatory frameworks where, rightly so, to protect investors, there are certain regulations where not everyone can invest in startups because it is a very risky investing proposition. Most startups fail. In money invested in startups, you may be locked up for 10 years. Imagine investing in the stock market and being locked up for 10 years where you can't get your money in and out. So there are regulations globally that prevent certain people, certain citizens from investing in startups. But that's changing globally, and more is the act of investing in startups being democratized, right? And then there's not only investment regulations, but each sector that I talked about, healthcare or commerce or fintech, has its own set of regulations that governments need to adapt to. So, whether that's enforceability of mortgages for consumers that are, to help grow the digital mortgage industry, or if it is, support for agriculture and farmers so you can create What e-commerce kind of for culture agriculture. you have seen in the startups? Yeah. I mean, when you are starting a business in a small vision, Yeah. what kind of a culture you have seen in this globally, not only in Pakistan Yeah. or an underdeveloped country? Yeah. So my view of what's happening in Pakistan right now is informed largely by what I saw investing in Indonesia from 2013 onwards. And back then, there wasn't much venture capital funding in Indonesia, but there was, like Pakistan, a large, vibrant, energetic, youthful population. Okay. There was a lot of business models that you could take from different regions and build them in Indonesia. A global awareness of what people were building in China and India and other countries, and bringing that to a new developing market like Pakistan was very present. A large growing middle class, so people had discretionary income to order food and buy e-commerce online, right? Right. This is the culture right now, I guess. This is the culture. This is the culture. And I think here, they're unlike Indonesia, and to the benefit of Pakistan, there's a big culture of engineering and educational institutions that for a long time Pakistan has had. And so that, paired with acceleration from COVID, paired with the availability of so many new business models around the world that have emerged in the past couple of years, I describe Pakistan as being like a rubber band that's about to go really forward, really fast. राइट। साथ इन्होंने अपने ही अंदाज में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के बारे में जो है वो अपनी राय दी है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्टार्टअप्स की बात हो रही है और बिजनेसेस जब स्टार्ट किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की आपने कहा कि कैपिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, फाइनेंस कैपिटल, और इसके साथ साथ एक रेगुलेटरी बॉडी भी आपको रेगुलेट करने के लिए होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं कि जो रेगुलेशंस, अब अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ भी रेगुलेटरी बॉडीज़ दिखाई देती हैं, तो ग्लोबली भी स्टार्टअप्स के लिए कुछ है ऐसी बॉडीज़ जो कि बिजनेस को चेक एंड बैलेंस कर सकें? सो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जिस तरह से सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने वीसी के रूल्स भी निकाले हैं, यानी वेंचर कैपिटल फंड रूल्स हैं। उसमें इन्वेस्टर्स के लिए भी रूल्स हैं कि वो किस तरह से किसी वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वीसी के अपने रूल्स और इन्वेस्टमेंट फ़िलासफ़ी होती है कि वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस सेक्टर में क्या उनकी एलोकेशन होनी चाहिए। उन तमाम चीज़ों को SECP जिस तरह से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से देखता है, तो वो उन्होंने रेगुलेशंस डेवलप की हुए हैं। लेकिन इसी तरह से ग्लोबल भी हमें नज़र आता है कि रिगार्डलेस पाकिस्तान के अलावा भी दूसरी कंट्रीज़ में भी इसी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका एक वो रोल होता है।
उसके ऊपर रेगुलेशंस होती हैं इस तरह से। लेकिन जो प्राइमरी ड्राइवर है वो यही होता है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें, इन्वेस्टर्स को अकोमोडेट करें कि वो आपकी जो इन्वेस्टी कंपनीज़ हैं या पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के वेंचर्स हैं उनको उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकें। सो ये पाकिस्तान में भी इसी तरह से अच्छी मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनकी तरफ जो है नज़र दिलाने की ज़रूरत है। इसी तरह से SECP की जो बड़ी फ्लेक्सिबल मैं कहता हूँ कि रेगुलेशंस हैं जो कि काफ़ी अकोमोडेट करती हैं, काफ़ी एंटाइज करती हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ताकि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर सकें। ये कहा यह जाता है ग्लोबली पाकिस्तान के अंदर अब जो बिज़नेस एनवायरनमेंट जनरेट हो रहा है बहुत फ्रेंडली है कि लोग आएँ, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि आपको अपनी लोकल डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होना ज़रूरी है। तो अब हम समझते हैं कि जो बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि एक हम कहेंगे मेजर लिया गया, एक इनिशिएटिव दिया गया टर्फ फाइनेंसिंग के हवाले से, जिसमें काफ़ी मशीनरी इंपोर्ट की गई। इंपोर्ट के नंबर्स भी हाउएवर हम कह सकते हैं कि बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उसकी जब मशीनरी यहाँ पर आएगी तो वो कितना काम करते हुए दिखाई देगी। आई गेस मेरे ख्याल में यहाँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है वो एक तो डिजिटल इकॉनमी का है, जैसे कि टेडी ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो हम जिस तरह से आपने नज़र उसकी तरफ इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाई की है, उसमें तो ये हो रहा है कि जैसे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग होनी थी और जिसकी वजह से ये टर्फ फाइनेंसिंग अनाउंस की गई। तो वो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकॉनमी है या हमारी जो डिमांड है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो तो वहाँ पर केटर होती है, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कनेक्टिविटी का। तो ये जो डिजिटल इकॉनमी है, जिस तरह से हम अब कनेक्ट कर सकते हैं इस 300 मिलियन पॉपुलेशन को, वो बड़ी इम्पोर्टेंट एक आस्पेक्ट है। तो वहाँ पर मेरे ख्याल में टर्फ फाइनेंसिंग के अलावा जो चीज़ जो रोल प्ले किया जा सकता है वो ये है कि किस तरह से आप स्टार्टअप वेंचर्स को किस तरह से प्रमोट करें, उनको आगे लेकर आएँ। और वो हम काफ़ी सारे इस तरह के वेंचर्स देख रहे हैं पाकिस्तान में जो कि मार्केट प्लेस बनते जा रहे हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज हम सब यही चाहते हैं कि वन विंडो सोल्यूशन हो। हम अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को किसी एक वन विंडो के थ्रू वो तमाम सर्विसेज दे सकें, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज की हों। सो फॉर एग्जांपल वी वुड वांट टू हैव अ कॉन्फ्लुएंस एंड अ मर्जर ऑफ banking services, stock broking services, insurance services to be offered in one app and one place. Okay. So वो चीज़ जब हम अपने clients को, customers को offer करेंगे तो उनके लिए बड़ा एक अच्छा value create होती है। राइट, वैल्यू क्रिएट होती है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वन विंडो ऑपरेशन जो आपने कहा, ये बहुत ज़्यादा एक सबसे ज़्यादा जो मेन आइडिया है वही ये दिखता है। अच्छा, जस्ट टॉक अबाउट टेडी, जस्ट टॉक अबाउट Antler. What is Antler actually? Antler is one of the largest early stage venture capital businesses globally. Okay. So we operate 12 funds in 17 cities around the world, from Singapore to Stockholm to Ho Chi Minh to Austin, Texas to Seoul, Korea. What we do is, at our core business, is investing in the earliest stages of a company. In each of these regions around the world, and we invest per location in about 20 companies per year, and we have about 370 portfolio companies of startups all around the world, and I run much of our global investments that are a little bit later stage, so companies that are generating real revenue. Have you invested in Pakistan also? I have, yes. Where? In what companies? Yes. Yeah, so I've made investments in e-commerce, made investments in Neobank, a branchless banking application. Okay. I've made investments in prescription drug delivery. There's a company called Davai that does this Okay, in you can Pakistan. specify the sector. Yeah? You can specify the sector. Yeah, You can so that's in identify. e-commerce, and then also in Sharia compliant lending as well. What's your investment in technology company? What have you found technology companies in Pakistan? Are they working up to the mark as compared to the global companies, global countries? Pakistan is a blank canvas. There are so many open areas of the chessboard across commerce, logistics, fintech, healthcare, real estate,
sustainability technologies. And the reason this is, Natasha, is because there are many issues in Pakistan today. Issues. There's What inflation, kind of issues? there's carbon emissions, there's global warming, there's agriculture prices rising, and It's that a universal creates, phenomena. Commodity prices are high. yeah, but that creates opportunity to solve those issues through the use of technology. So whether that's sustainable energy, solar energy, new digital grid technology using software, electric bikes, distribution of healthcare via telemedicine as opposed to through a doctor's office. There are a tremendous number of solutions fixing what otherwise would have seemed to be very difficult problems to solve in Pakistan. राइट साथ इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ इश्यूज जिसमें इन्होंने कहा कि कुछ जो है वो इश्यूज प्राइसेस के हवाले से दिखाई देते हैं, इन्फ्लेशन के हवाले से दिखाई देते हैं, बट इट इज़ द यूनिवर्सल फिनोमेना. मैंने कहा पहले भी कि कमोडिटी प्राइस वैसे ही हाइक पर हैं और ये पूरी दुनिया में चपड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. इज़ नॉट ओनली इन पाकिस्तान कि ये जो है वो आइडेंटिफाई सिर्फ पाकिस्तान को किया जाए. आप क्या समझते हैं? ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन अगर हम अभी रियल टर्म्स में भी देखें, वी हैव जस्ट गॉट टू नो yesterday के 11.5% का inflation आया, which is way higher than what the market was anticipating, and for this reason we also see के by the mid of this month we are going to see a monetary policy announcement as well. Okay. So वहाँ anticipation थोड़ी सी इसी तरह से है कि interest rates hike की जो कि market को फिर affect कर सकता है, but then of course अगर हम inflation की बात करें तो उसमें सबसे जो important part है वो तो हमारी erosion of purchasing power है, and of course technology is then there to solve that problem, because if I am going to get a certain product at a reasonable price, जब तक वो हम delivery mechanism को जैसे टेडी ने आइडेंटिफाई किया कि जब तक हम उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, उन सॉल्यूशंस को नहीं लाएंगे, जैसे हम अब राइड हेलिंग सर्विसेज देख रहे हैं, फूड डिलीवरी सर्विसेज देख रहे हैं, तो ये अब उनका सॉल्यूशन है. ये जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर हम पुराने बिजनेस मॉडल पे आएंगे तो वहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका था कि वो वायबल नहीं था पुराने बिजनेस मॉडल में उन बिजनेसेस को उस तरह से चलाना. लेकिन जो ये नए सॉल्यूशंस आए हैं उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है और साथ में आप ज़्यादा लोगों को कनेक्ट भी कर सके हैं और इस तरह से उनके रेवेन्यूज़ भी नए बिजनेस के इस तरह से इम्प्रूव होते हैं. Business genre has changed now because of COVID and because of 2 years lockdown. So what you have seen in technology companies, how they flourish in Pakistan? Yeah. So by 2030, there was a Google study that came out a couple of weeks ago. It said that the Pakistan digital economy could contribute about $30 billion to GDP by the year 2030. I believe that. Yeah. I saw in Indonesia. Inshallah. I mean, similar. Inshallah is right. I saw in Indonesia how there was one company that we invested in and it grew from a value of $200 million to $25 billion in 7 years. 7 years, right? Right. That company contributes about 3% of Indonesian GDP because it enables merchants to sell in a more efficient way. It enables supply chains to be more efficient. It attracts capital to build, warehousing and last mile logistics. And so I think technology in Pakistan has a real tremendous opportunity to grow GDP and attract investment, and that actually leads to helping close the current account deficit, which is, obviously, as you know, one of the key drivers of inflation. Okay, we will discuss more. अभी हम एक ब्रेक के जानिब चलते हैं, साथ रहिए. KTrade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए. अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से. बस KTrade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी.
कभी भी। KASB KTrade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम टेडी से बात कर रहे थे, साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, टेडी हिमलर भी हमारे साथ मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त सी डिस्कशन चल रही है जिसमें हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करें, न्यू बिजनेसेस के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो हम पूछेंगे यहाँ टेडी से, टेडी व्हाट आर द की रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ टू स्टार्ट अ इन्वेस्टमेंट in any business? Yeah. What are the key points which we have to see before starting a business? Yeah. So I think at first, at this early stage, the first thing and most primary thing it comes down to is team. You need a team that is experienced, that has expertise, that knows how to scale a business. So, you know, what we've observed in Pakistan is there are many alumni of big tech companies like Kareem or Swivel or Daraz that have gone on to start Different new e-commerce businesses. companies, right? Yeah, and they go on to start new businesses. It's like the circle of life. They leave the big business and they start a new business. And so an experienced team is first. Second, I think, is the product that they create actually fits with the market opportunity. So, you know, you create a digital bank, and that it's really important to understand how that product may get adopted in the market. Who are you targeting? Are you targeting young? Are you targeting old? Are you targeting male? Are you targeting female? So having that product fit into the market is really important, and it's not easy sometimes. So we call that product market fit. Right. So team and product, and last is a large market in and of itself. So when you think about the education market or healthcare or commerce, right? 170 billion in retail commerce in Pakistan. Those big markets undergoing dynamic change because of digitization are where we want to center our attentions in investment. बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन साथ हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई देखी हैं, जैसे कि टेडी ने पॉइंट आउट किया है 3 चीज़ें कि टाइमिंग, एक हम प्रोडक्ट की बात करें, और कौन सी टारगेटेड हमारे पास जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं या ज़्यादातर जो एक एज गैप दिखाई देता है। तो आप समझते हैं कि जो डिमांड है सबसे पहले उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जब लोकल डिमांड फुलफिल नहीं होती तो हमें इम्पोर्टेड आइटम्स की तरफ जाना पड़ता है, अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात की जाए तो। सो ऑफ कोर्स बिजनेस केस हैज़ टू बी ऑलवेज देयर। जैसे इन्होंने कहा कि वो बिजनेस केस तो होता है, लेकिन ये अगर एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहे हैं, सो फॉर इंस्टेंस एक इन्वेस्टर क्या देखता है, इन्वेस्टर इस तरह के बिजनेस वेंचर्स को देखता है जिसमें कि नंबर 1 इज़ बिजनेस केस, वो तो वहाँ पर होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बाद फिर वो टीम कॉम्बिनेशन है जो कि एक्चुअली उस बिज़नेस को, नए बिज़नेस को ड्राइव कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एन एक्सीलेंट बिजनेस प्रोपोजिशन बट यू डोंट हैव द राइट टीम, तो फिर होगा ये कि ऑफ कोर्स वो बिज़नेस चलेगा नहीं। राइट। So what he's actually trying to point out is कि you know it's really important कि आप वो तमाम tools जो हैं वो भी necessary उस business को provide करें, but at the same time the right team is the most important thing, क्योंकि वो टीम जब आपकी सही होगी तो जो नए challenges आएंगे उनको वो सही तरीके से address करेंगे। राइट, टीम का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, यू आर वेरी राइट। अच्छा साथ ये तो हुई बात, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से और स्टार्टअप्स के बिजनेसेस के हवाले से जो है वो बात हुई। अब बात करते हैं कुछ इकोनॉमी के हवाले से। पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, IMF से जो है वो डील अच्छी हो रही है, सऊदी जो है वो डिपॉजिट्स वो दिखाई देते हैं, चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। हैव यू सीन दैट कि पाकिस्तान में जो अब जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, ज़रा संभलते हुए चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं? एब्सोल्युटली। सो आई वुड से कि देखें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो लाई जा रही हैं, ख़ासतौर पे पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो अब वो ले रहे हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह सब्सिडीज़ की रिमूवल है, ये कुछ सेक्टर्स को हर्ट करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपकी इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर चीज़ें हो रही हैं। मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ कि ये रिकैलिब्रेशन हो रही है मार्केट की इकॉनमी के साथ,
और जिस तरह से ये इकॉनमी हमारी एक नई फुटिंग के ऊपर आ रही है, जिसमें कि जो सब्सिडीज़ के ऊपर हमने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को खड़ा किया होता है, अगर हम उन सब्सिडीज़ को रिमूव करेंगे उसकी वजह से नेचुरली जो डिमांड डायनामिक्स हैं वो भी चेंज होती हैं. सो इन इफेक्ट जो चीज़ हो रही है वो एग्रीगेट डिमांड की एडजस्टमेंट है. सो वो एग्रीगेट डिमांड की एडजस्टमेंट जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज़ करते हैं या एट टाइम्स आप फिस्कल पॉलिसी टूल्स को यूज़ करते हैं, यू नो ऑफ कोर्स आप सब्सिडीज़ को रिमूव करना और टैक्सेस को बढ़ाना, जो अभी 350 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस का एक अनाउंस किया था इन्होंने कि गवर्नमेंट ने कि सेल्स टैक्स में जो भी सब्सिडीज़ हैं उनको वो ख़त्म कर रहे होंगे या वेवर्स दिए हैं उन एग्जेम्पशंस को ख़त्म कर रहे होंगे. तो ये चीज़ें पॉजिटिव हैं इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी. और जब आपकी इकॉनमी जब एक नई फुटिंग के ऊपर आ चुकी होगी तो फिर आप एक नई ग्रोथ देखेंगे और वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर होगी. सो किसी भी इकॉनमी के लिए ट्रेजेक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. आज से 2 साल पहले हम -0.4% की ग्रोथ पे थे. लास्ट ईयर वी पोस्टेड 3.9%. दिस ईयर वी आर एमिंग 4.8%. सो दिस ट्रेजेक्ट्री इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. एज वी पास 5% प्लस तो फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई देती है. राइट, हम इकोनॉमी का जिसको हम इकोनॉमिक साइकिल कहते हैं या पहिया कहते हैं वो फिर हमें सही तरह से चलता है. पहिया चलता है तो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं. अच्छा, एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज करने होंगे, जैसे कि हम हर बार ये बात करते हैं कि इंपोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी. दिस इज़ द ओनली रीज़न कि पाकिस्तान जो है वो आगे निकल सकता है या किसी सक्सेसफुल पाथ पे जा सकता है. सो ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सचेंज डिफिसिट कंट्री है. उसमें फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज ना सिर्फ स्टेबल हों और वो इसी तरह से हो सकते हैं कि हमारे पास रेमिटेंसेस जो अभी $30 बिलियन पर एनम का एक नंबर स्टेबलाइज हो चुका है. पहले इट यूज्ड टू बी लाइक $12 billion and 14 and 15 billion dollars. Now it's double that in the past 4-5 years, and that is really, you know, commendable on the part of the government as well. इसी तरह से एक और इनिशिएटिव इन्होंने ये किया है कि रोशन डिजिटल अकाउंट लेकर आए हैं, तो वहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अगेन टू इन्वेस्ट बैक इन देयर कंट्री इन डिफरेंट एरियाज, वेदर इट्स लाइक पाकिस्तान, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या फिर आपके जो रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट है. एग्जैक्टली. तो बहुत सारे इस तरह के इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने जो कि बहुत पॉजिटिव हैं. सो मेरे ख्याल में ये जो आपने जिस तरह से कहा कि हमारी इकोनॉमी को एक्चुअली ज़रूरत है उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो कि अब बिल्ड हो रहे हैं, जिसमें आपने IMF के प्रोग्राम की बात की, वहाँ से भी सपोर्ट आ रही है. हमने सऊदी अरब से देखा है कि वहाँ से भी फाइनेंशियल एड जो है वो आई है. तो मेरे ख्याल में यहाँ जो ज़रूरत है वो यही कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना. तो एक्सपोर्ट्स की जैसे आपने बात की थी कि टर्फ की फाइनेंसिंग अनाउंस हुई थी लास्ट ईयर, इस साल जो है उसकी अब रियलाइजेशन हम देख रहे होंगे. तो नई LCs खुल रही हैं. जो $1 बिलियन प्लस टेक्सटाइल कैपेसिटी एनहेंस होनी थी वो जब अगले साल में किसी वक्त हो जाएगी तो फिर हम बहुत नए नंबर्स देखेंगे. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी जो चाइना से आप देखेंगे शिफ्ट ऑफ यू नो ऑर्डर्स, टेक्सटाइल ऑर्डर्स जो हमें पिछले साल भी नज़र आए थे ड्यूरिंग द कोविड. तो यू नो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली गॉट अफेक्टेड नेगेटिवली फ्रॉम कोविड, बट पाकिस्तान में ये हुआ था कि हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर था दे एक्चुअली हिट द बूम बिकॉज वो फिर हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चले गए. सो मच सो कि नाउ दे वर एक्चुअली डिमांडिंग टू यू नो इंक्रीज देयर कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट देन वी वर यू नो ऑन अ कंट्री लेवल वी वर शॉर्ट ऑफ डॉलर्स. राइट. सो ये वो सिचुएशन थी जो कि हमने पिछले पास्ट में हमने विटनेस की है, लेकिन अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं. Teddy is smiling. I want to add him in the discussion. Teddy, what do you think about Pakistan? Despite all these positive activities, we are talking about digitalization and economic condition, Pakistan's economic scenario. What do you think about the Pakistan economy? How do you rank it? I think it's an economy in transition. Okay. I think it's an economy that is currently very export-led, is in a stage of somewhat industrialization with textiles and consumer products and a large consuming population, but it needs to transition, and it is transitioning to a knowledge economy, one that is valued based on the intellectual property of its citizens and perhaps a little bit less on what can be produced by the country and its labor. I think you know the history of the country suggests that it actually was built on foundations of knowledge and culture and education and Absolutely. studying and engineering.
it's a very advanced science and technology country, and it's exciting to see how advances in technology, whether that's artificial intelligence or crypto and blockchain and cryptocurrency and blockchain, right? Or financial technologies you're able to connect the citizens here with those sorts of new technologies, and they're building these things. But one of the biggest effects actually is you talked about remittances. Okay, there's been a big growth in remittances over the past couple of years. Have you heard about Roshan Digital Account? Yes, I've seen it in the newspaper, of course. Okay. Very popular, yeah. But it's not just the capital that's coming back to Pakistan. It's actually people too. So have you heard of this term, Wapistani? Wapis? Pakistan. Return? Okay. Pakistan, right? Okay. And the Wapistani effect, I think, is in full force, where you have those who many years ago would go stay and work in London or in New York or they now are coming back because they see opportunity in the digital sector. And I saw that as a key part of the growth in the digital economy in Indonesia, over the last 7 years. And I see that as a key cornerstone of the growth in the Pakistan digital economy over the coming years. So primarily जो हो रहा है वो यही है कि वो जो transition है वो change of business models है. So the way we used to do business is now getting changed because those individuals who used to work abroad and study abroad, now they are they have the pain. They used to invest in Pakistan, but there is no proper channel now. From the benefits of Roshan Digital Account, there is a proper channel from this Pakistanis can invest in the country. Yes, exactly. But I'm more saying that Pakistanis can also move back to the country. And a big part, I think there's two big drivers, there's a couple of different drivers of that. Of course, we talked about COVID acceleration. We talked about in 2014, there were about 40 million internet users in Pakistan. Today, there are about 110 million. But that's still very short of the full 220 million internet users. Okay, talk about the technology companies in Pakistan. How do you see the future of technology companies in Pakistan, digitalization in Pakistan? Yeah. How do you see that? So I think right now Pakistan has a very large IT services segment of the economy. This is companies in Pakistan because they have very talented but relatively inexpensive labor are doing projects for big U.S. companies or European companies or India, and so that's stage one of development of IT. Stage two of development of IT is creating scalable products and services that the domestic economy can use. So you may have seen companies like Airlift or in quick delivery or Duraz in e-commerce. Right. You may have seen Zameen in Grana in real estate, right? And so that's stage two, I think. And I think we're coming from stage one of technology to stage two, where there's actually broad adoption of these new types of products across a variety of sectors. This is called cashless economy. साथ एक कल्चर दिखाई दे रहा है कैशलेस इकोनॉमी का. हम यही देख रहे हैं. मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में यही बात करती हूँ कि अक्सर अब हम जाते हैं शॉपिंग करते हैं और कार्ड चार्ज करते हैं. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मनी इन द मार्केट. तो आप समझते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी होना भी एक अच्छी चेंज है. इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं. एंड यू कैन सी द चेंज इन द ट्रेंड एज वेल. लाइक अगर हमारी इस वक्त 120 मिलियन की एडल्ट पॉपुलेशन है तो उसमें से 80 मिलियन मोबाइल वॉलेट्स अब क्रिएट हो चुके हैं. एंड द नंबर इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. आई मीन द ग्रोथ इज लाइक 100% per annum, for instance, for the past और ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेड है ये सब कुछ. जी एग्जैक्टली. सो हम बेसिकली जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि अनबैंक्ड इकोनॉमी को बैंकेबल उसके ऊपर हम चैनल्स पे लेकर आएँ, उनको डॉक्यूमेंट करें. वो डॉक्यूमेंट इसी तरह से हो सकते हैं जब हम उनको इस तरह के एवेन्यूज़ प्रोवाइड करें कि चाहे वो रेमिटेंसेस हो, इंटर सिटी या इंटर कंट्री फंड्स ट्रांसफ़र हो, वो उनको चैनल्स मिल चुके हैं. अब पहले जिस तरह से अगर हम बैंकिंग बिजनेस मॉडल देखें तो वो बड़ा ब्रिक एंड मॉर्टर था. तो यू हैव टू हैव फॉर एग्जांपल 1400-1500 ब्रांचेस all across the country,
and that used to require so many so much investment in that sort of infrastructure. Now you don't need that infrastructure. You don't need brick and mortar expansion, and you don't need those 1,400 branches. You just need a very good technological infrastructure to connect these people, and this is exactly what's happening. Right. What are the things that the government of Pakistan are helping in the businesses to start these startups and establish their businesses? Yeah, so I've met with several members of the government, Minister of Science and Technology, Minister of Commerce, the Special Technology Zones Authority, all of whom were extremely supportive of the startup ecosystem. So the first thing that they can do is be a vocal supporter and cheerleader, because they have a microphone. Like you have a microphone. Right. Like I have a microphone. Yeah. They have a microphone to a huge portion of the population to talk about this is possible now in Pakistan, right? That you can leave a very stable job and start become an entrepreneur and create a big digital business. These are the opportunities, I guess. And so that's the first. It's they can be the microphone for the movement. And then I think the second is to promote greater connectivity, whether that's smartphone connectivity or 3G and 4G internet services, so that this population and the domestic market continues to grow. You've probably seen in the paper there's a Samsung manufacturing plant being built that will create jobs, and that will also create more internet users, right? And so I think the two big things, microphone and more digital connections. Apart from all this, how do you find Pakistan as a country? It's beautiful, it's vibrant, and it's very diverse. On a lighter note, we are asking. Yeah, and have you tried the food? Yes, I have. I've had biryani probably half of the nights that I've been here so far. Okay. Saad, aap bhi the jab inhone So of biryani course, try I mean, ki. one of the most famous foods in Pakistan. Right. But, so as he said, I mean, the culture is very diverse. And of course, just as foreigners aate hain, they look at different aspects, and then they find those connections as to where they can invest actually. So वो जो छोटी सी इनको जो जिसमें कहना चाहिए कि वो डेटा इंडिकेटर्स होते हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी बेसिस पे वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, and that actually helps them and gives them that sort of confidence as well. Why they should be holding back until now, and now why they should be investing at this stage, because वो infrastructure अब उनको नज़र आता है कि वो growth हो सकती है. There is a fear of another COVID wave. Have you found it? Have you found this in Pakistan or in other countries? This fear, this frightening situation? Yeah, I think the Omicron variant, from what I've heard, is spreading rather rapidly, and there is high transmittability, and so I think everyone is taking proper precautions, and we've seen many of the and gotten used to this through prior waves, but I think everyone's taking it very seriously. Do you think this wave can affect the businesses, the startups? I think this wave of technology is going to be a lot stronger than a virus. I think it's inevitable. I think it's going to be a lot, more powerful than a government regulation. I think that it's kind of inevitable that the digital economy in Pakistan grows, irrespective of a virus or a regulation or inflation. I think this actually happens in an inevitable Okay, I'm way. interrupting you here. We are going to a break. Stay tuned. KASB KTrade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस KTrade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB KTrade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी। टेडी हमारे साथ मौजूद है, साथ हमारे साथ मौजूद है। थर्ड वेव की बात हो रही है जो कि कोविड की ये वेव दिखाई दे रही है, बड़ी फ्राइटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है। तो इनसे मैं पूछूंगी साथ कैसा दिखाई दे रहा है दुनिया में, क्या अब जबकि अब हमारे पास वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, पहले जो था एक फियर वो डिफरेंट था, उस वक्त वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, अब तो हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, तो क्या ये फियर अभी भी बरकरार रहेगा? सो फॉर श्योर फियर उस वक्त तो और बढ़ जाएगा जब अगर हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे होंगे, बट वी हैव सीन के इवन इन द लास्ट कपल ऑफ वेव्स जिस तरह से नए नए वेरिएंट्स आते रहे हैं, पाकिस्तान हैज़ बीन अ नेट बेनिफिशरी ऑफ यू नो द सिचुएशन इन द सेंस के जो बिजनेस ऑर्डर्स थे वो दूसरी कंट्रीज से शट हुए, लेकिन हमारे पास हमें वो बिजनेस ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए थे। बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो हाईलाइट के जो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से शिफ्ट आया है डिफरेंट एरियाज़ में, उसमें अगर आप एजुकेशन को भी काउंट करें तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल द वे वी यूज़ टू डिलीवर एजुकेशन। यू नो अगेन वही ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम है जहाँ पे आपके 30,000 से ज़्यादा यू नो स्कूल और उसकी ब्रांचेस हैं पूरे मुल्क में फैले हुए, लेकिन नाउ फॉर एग्जांपल कोविड हैज़ caused devastation amongst the masses because of the you know how to deliver the education। तो वो बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने देखा है कि स्पेशली जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू रहा है, और ये वैसे ही एक इतना बड़ा डिवाइड क्रिएट हो गया पहले ही amongst the developed countries and then the underdeveloped countries। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी We have the government initiative टेली स्कूल है, और वो बहुत ज़बरदस्त चैनल है जिसमें 1 to 12 तमाम जमातों की जो है वो तालीम दी जाती है ताकि गाँव गोड और रूरल एरियाज़ में भी जो लोग हैं वो भी पढ़ सकें और एजुकेट हो सकें। तो हम एडॉप्शन देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर हर जगह हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ऑफ कोर्स एजुकेशन डिलीवर करना है, बट मीडियम हमारा यही टैबलेट्स मोबाइल प्लेटफॉर्म्स you know ये चीज़ है। Technology is helping in education system as far as education is concerned. Yes. What do you think about technology that in the COVID situation, education is compulsory for all kids in the world? How it is helping for the spreading the education? Yeah, I mean, you're going from a situation where you have one teacher for 20 students, let's say. Yeah. Now you could have one teacher that can serve 200 million people, right? And that's a pretty big change. You can have the best teachers not only create content for a large number of students, but you also can have them monetize that content. So actually the best teachers make a better living as well when you can connect them to students. And I think there's been a lot, I've seen several companies that are teaching, you know, in a tutoring, creating online tutoring, where they're teaching towards the national tests. And so I think it really will supplement the existing school systems, brick and mortar school systems here, and you know, complement that and actually help you achieve higher scores on the test. Actually, on the online education programs, they observed higher rates of success on the national test than even in the brick and mortar schools. So I think there's some pretty extraordinary positive externalities, positive benefits to teaching online. Right. Technology is helping in several ways, in hospitals, in education, in other e-commerce areas, shopping. What do you think about the future of technology in the global situation? Yeah. The world is going so far and the technology is with us. What do you think? Yeah, I think this cycle of technology may appear to be moving really fast today. And it is. But I think each technology is building on the next, and it's actually accelerating. So, you know, what you're seeing in terms of online education, and then artificial intelligence and robotics, and, you know, cloud computing and semiconductors, all this stuff is getting even faster. So, buckle up. Yeah. Last note of the program, साद ऐड करना चाहेंगे स्टार्टअप्स और पाकिस्तान के अंदर जो फ्यूचर दिखाई देता है इसके बारे में।
प्लीज। स्टार्टअप तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में बहुत बूमिंग स्पेस है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि तकरीबन कोई 300 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इस वक्त पाइपलाइन में नज़र आती हैं, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। दे आर एंड ईच एंड एवरी डिफरेंट बिजनेसेस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रकिंग की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, प्राइमरली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो हम प्राइमरली जो देख रहे हैं वो है ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस मॉडल in each and every segment of the society, whether it is education as we have discussed, but otherwise in pharmaceuticals or in telemedicine, in terms of agriculture as well. So हम टेक्नोलॉजी के तो बहुत डिफरेंट एरियाज़ देख रहे हैं, और पाकिस्तान में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो, जैसे अगर हम अपनी जीडीपी को अगर हम देखते हैं तो उसमें 60% कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर की है, 20% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर की, अनदर 20% कम्स फ्रॉम इंडस्ट्री। सो मेरे ख्याल में ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हम जितने भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि वो अपने उस डिसिप्लिन को अपने बिजनेस मॉडल्स को के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करें, बिकॉज at this stage when we are inviting the foreign investors to invest in Pakistan, they need to have very good experience investing. इनोवेशन की भी जरूरत है, राइट। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। KASP KTrade लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस KTrade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस, और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP KTrade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले साथ से बात कर रहे थे, हम टेडी से बात कर रहे थे। लास्ट मोमेंट्स हैं प्रोग्राम के, तो मैं चाहती हूँ कि टेडी से जो है वो वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो कर लूँ। हाउ डू यू सी द इन्वेस्टमेंट्स आर इन पाकिस्तान? हाउ डू यू सी मोर इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान? आर दे कमिंग? They are. I think it's inevitable that investors from China, from US, from Russia, from Southeast Asia will all come to Pakistan to invest. But there's one, I think what's holding it back today is, public perception, that it's safe and secure and it's open and it's easy to get to and easy to get around. And I've had a wonderful time in Pakistan. Pakistan is a peaceful country. It is a peaceful country. And I think public perception will ultimately reflect that reality. Right. साथ प्लीज़ ऐड करें आप कि बिजनेसेस जो है वो आप देख रहे हैं फ्लरिश करते हुए, और ख़ासकर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो अब ज़्यादातर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले थोड़ा सा वो बैक फुट पे थे, तो प्लीज़ ज़रा बताइए। सो प्राइमरली ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टेबल करेंसी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट एट द सेम टाइम जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स होते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पर बिजनेस केस तो बहुत सारी जगहों पे आपको नज़र आएगा कि इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें फैसिलिटेट करना। थैंक यू सो मच टेडी, आप यू हैव जॉइंड अस इन प्रोग्राम। थैंक यू सो मच साद, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमने प्रोग्राम में आज के दिन स्टार्टअप्स के बारे में, न्यू बिजनेसेस के बारे में, और ख़ासकर जो छोटे पैमाने पे बिजनेसेस फ्लरिश करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक ज़बरदस्त फ्यूचर दिखाई देता है, और यही बैकबोन है पाकिस्तान की। SMEs की बात की जाए तो वो भी कोशिश की कि डिस्कस करें और सोल्यूशंस निकालें और रेगुलेशंस की बात करें। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।